So kids, in today's class, we will see the relation between physics and mathematics and how our understanding of real world can be made more meaningful if we use mathematics as a tool in understanding the laws of nature, right? So to start with, what we have to think or what we have to make an intention is whatever I am explaining, try to listen with open heart and mind and ask questions wherever you feel something which is not getting understood. ओके तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे कि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है और जो लॉज ऑफ नेचर हम अपने आसपास महसूस करते हैं या देखते हैं उसको हम बेहतर अंदाज में कैसे समझ सकते हैं, है ना? और जब हम बेहतर अंदाज में समझेंगे तब हम उसके अंदर की जो सीक्रेट्स है उसको समझ पाएंगे, राइट? और जब आपको सीक्रेट्स का पता चल जाएगा कि लॉज ऑफ नेचर में क्या क्या सीक्रेट्स हैं, देन वी कैन यूज दो सीक्रेट्स इन डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दैट नॉलेज. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कोई ऐसी चीज़ का? कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आपने किसी लॉ को एक्सप्लोर किया, उससे कुछ सीक्रेट पता किया और उसको यूज़ किया जो पहले आप नहीं कर सकते थे, बताइए. ईसा? Yes. आप बताइए कोई ऐसा लॉ, एनी लॉ विच यू डिस्कवर्ड. You can keep mic little bit away from your mouth so that it is okay. Okay. तो कोई ऐसा लॉ जो आपने डिस्कवर किया, कल ही डिस्कवर किया आई थिंक, और उससे आपने कुछ ऐसा किया जो पहले नहीं कर सकते थे. Balloon. Whoa. You can speak in English if it is difficult to speak in Hindi. The balloon that I experimented Yeah. on the wall, and then the other trick was using the fan and putting the balloon on the top, and it just flies up and comes back. Yeah. Okay, so you can put the mic. So basically what you did some experimentation and you saw that if you rub a balloon, an inflated balloon with wall, then it generates some sort of attraction between the balloon and wall. And it seems there is a glue between balloon and wall and it sticks there. And then in second experiment what you did, you use a fan to balance balloon in the air, which is not natural, like you always see a balloon coming down, but with the force of air you balanced it, right? So this is something which comes under the realm of observation and experimentation, right? So observation and experimentation is the first step of scientific method, right? But Isa, since he is little, he don't know the intricacies behind it. Why there is an attraction by rubbing the balloon with wall, right? So those details you can only understand if you try to see the details of those observation, right? So let's start the class and see how these things make sense and how we use mathematics as a tool to explore these kind of observation. Okay, you guys ready? Yeah. Yes? Excited? Okay, let's go. Okay, the very first thing. Okay, whatever you want to say, you have to say in mic. Okay? Say it's part 2. Okay, it's part 2. So, we all know what is science, right? Who can answer me what is science? Science. Mariam will answer. Give the mic to Mariam.
Science is the fundamental knowledge of everything. No. Science is the systematic knowledge of everything. Yeah, the systematic knowledge of anything is called science, right? There is no disagreement with this definition in the scientific community. So if you are doing a systematic knowledge of anything, that is called science, right? So science is the systematic knowledge, right? So systematic knowledge of nature is natural science, or systematic knowledge of anything, like even if you do systematic knowledge of history or whatever subject you can think of, so that is called science, right? Systematic knowledge of anything. But when it comes to natural science, which is our subject, it had the systematic knowledge of that natural science goes through certain processes, right? And one of the key process of acquiring scientific knowledge is observation and experimentation, right? So observation is the first step. Based on observation, you get some what? You derive some conclusion, right? Now this conclusion could be right, this conclusion could be wrong. So how you come to know that your observation and derived conclusion is right? What you do? You do experimentation, right? You do experimentation and you validate your conclusion. You do experimentation and you do what? Validate your conclusion. And after validation, if the conclusion is coming same, if the repeated experimentation is giving the same result, it means your conclusion is right. And if the experimentation is not coming consistent, it's coming different, then your conclusion could be wrong, right? So the right conclusion becomes the fact. And what if you can't guess, you can't arrive at a right conclusion? If you can't arrive at a right conclusion, it remains as a theory or postulation. A theory could be like a strong theory or weak theory, intermediate theory. It depends what kind of theory we are postulating. Okay. Now, ये तो background knowledge है. This is all what? Background knowledge. I was expecting you guys to know in advance, right? Now, when we observe and do experimentation, we need certain methods. We need certain method, or we can say a standard approach. We need a standard approach to do what? To do observation and experimentation. And this standard approach uses certain tools, right? You need certain tools. It depends on what kind of experiment you are doing, right? And one of the key tool you use in doing observation and experimentation is what? Mathematics. So मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक टूल की तरह है जो कि यूज किया जाता है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की दुनिया में, है ना?
क्लियर? तो ये रिलेशन समझ में आया, राइट? मैथमेटिक्स को ऐसे भी हम समझते हैं कि ये एक तरह की फिलॉसफी है जो कि लॉजिक और रीजनिंग पे बेस्ड है ना? एक लॉजिकल एंड रीजनिंग है, और वो हमारी जो नेचर की कुछ फंडामेंटल ट्रुथ है ना, जो फंडामेंटल सच्चाई है, उसको समझने में हमारी मदद करती है। तो ये हो गया एक प्रीलिम्स नॉलेज। अब क्या है कि अभी हम पूरे सब्जेक्ट पे आते हैं जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। मैथमेटिक्स में जो है सबसे पहली चीज हमने क्या चीज सीखी है, अगर आप बचपन से अपना मैथमेटिकल जर्नी को आप रिकॉल करते हैं तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी मैथमेटिक्स में? Counting. काउंटिंग, राइट? यू यूज्ड नंबर्स, राइट? अब अगला सवाल यह है कि नंबर होते क्या हैं? बताइए, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट आर नंबर्स? Anything you can count. Isa, you will answer. What are numbers? Numbers are the numbers that are base 10, and it's 0 up to 9. Okay, that's a good example of numbers, but the question remain unanswered. What are numbers? Okay, what did you say? Can you repeat again? Anything we can count. Like 1, 2, 3, 4. Those are numbers we can count. Anything which we can count are the countable objects. Mariam? So numbers are the signs or symbols used to count an object. कैसे बोलेंगे इसको? Signs and symbols. Numbers are the signs and symbols used to count an object. एज्यूम कीजिए कि सिविलाइजेशन के सबसे पहले इंसान आप हैं, फिर एक दूसरा इंसान आया, ज़रूरत इस बात की पेश आई कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उस एक्सचेंज के प्रोसेस में आपको पता करना है कि किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है ना? तो हम उस चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? नंबर्स से, राइट? तो नंबर्स जो होते हैं हमारे पास क्या है? साइंस एंड सिंबल्स, साइंस एंड सिंबल्स, राइट? किस चीज के लिए यूज हो रहा है? यूज टू काउंट ऑब्जेक्ट्स। यही तो हो रहा है या कुछ और हो रहा है? नाउ नंबर अगर मैं लिखता हूं 1 2 3 4, ये क्या है? नंबर्स है, राइट? बट इन नंबर्स की कोई मीनिंग है? क्या? There is no. It's just a symbol, and has a value. Yeah, it's just a value. It could be anything. 1 mango, 1 gold coin, 2 balloons, 3 pizza, कुछ भी हो सकता है ना? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, right? So these are numbers. Now if we have number with a unit, जैसे मैं लिखता हूं 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 किलोग्राम, 10 न्यूटन, या 40 किलोमीटर पर आवर,
या मैं लिखता हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सब क्या है? The units. These are two things. Number with a unit, right? Number with a unit. तो जब नंबर और यूनिट एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? A quantity. No, these are quantities. So these numbers are quantity, right? So this is wrong. How we do the bracket? So these are quantities, right? Quantities are just the abstract number. You don't know what is 4, do you? No. Unless you have 4 mangoes in your hand, you will say, okay, I have 4 mangoes. But ये जो चीज़ें हैं सारी, इसमें देखिए क्या मामला है. इसमें मामला ये है कि not only numbers, you have got certain units. So instead of calling them quantities, you will call them what? Physical quantities. क्या बोलेंगे इसको? Physical quantity. I expect you guys to remember these terms. अगर आप लोग को ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो फिर जो है बड़ा मसला है. So if they are only numbers, Isa, what do we call it? Quantity. Quantities. If you have got number with a unit, you call it what? Physical quantity. Physical quantities. The interesting thing about quantities is that you can add or you can do, not add only, you can do any mathematical operation on quantities, right? मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, Addition, subtraction. गुड. तो किसी भी दो नंबर को हम जोड़ सकते हैं, किसी भी दो नंबर को घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डू एनीथिंग विथ क्वांटिटीज. कोई दो ऐसे नंबर हैं जिसके ऊपर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते? No. नहीं, ऐसा नहीं है. हम कोई सा भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर के ऊपर. लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में क्या बात सच है? क्या इस बात की में कोई सच्चाई है कि हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ? लेट्स सी. इफ आई से 5 मीटर प्लस 5 मीटर, ये क्या होगा? 10 meters. Right. 5 meter plus 5 meter is 10 meter. Is this something which is new? No. Is this something which requires some extra thinking, extra mind? No. No. But जब आप 5 plus 5 equals to 10 लिखते हैं without meter, that is when you deal with only quantity, you deal with only numbers. But here 5 meter and 5 meter, it is what? Not only the number, not only the quantity, it's a physical quantity. Physical मतलब जिसके बारे में आप अपने दिमाग में कोई इमेज बना सकते हैं, कोई तस्वुर रख सकते हैं, राइट? वही तो फिजिकल क्वांटिटी होती है. You can make, when you say 5 meter, ultimately you can think of a stick which is 5 meter long, right? That stick can be used to discipline a kid who is not attentive in the class, right? Okay, now 5 meter plus 5 meter equals to 10 meter. But if I ask you to do 5 meter plus 5 kilogram, what will be the answer? It's not possible. It's not possible? Why? Because they have different units. They are different units. Okay. So the rule which you know, which you understand here in physical quantities is that you can't
just add or subtract any two physical quantity. They must have same units. But you can multiply and divide different physical quantity. जैसे स्पीड है, स्पीड स्पीड क्या होता है? Speed is the distance by time. Which is distance is, let's say, x, and it takes some time in, let's say, time t, right? तो distance की unit क्या है? Unit of kilometer. meter, kilometer, centimeter, right? So let's say it is kilometer, and time की unit क्या है? Seconds or hour, let's say hour, right? तो इसकी unit क्या होगी? किलोमीटर पर आवर. अब चूंकि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड मौजूद है, जो हमने डिफाइन ही किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन वी कैन हैव डिफरेंट यूनिट्स विच आर गेटिंग डिवाइडेड, है ना? लेकिन जब आप ऐड कर रहे हैं तो आप स्पीड में स्पीड को ही ऐड कर सकते हैं. स्पीड में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, स्पीड में मास नहीं ऐड कर सकते, है ना? इस चीज का ध्यान रखना है. सो द रूल इज अ बिट डिफरेंट हियर, that in the case of physical quantity you can't just add any number, you can't just subtract any number, you can't just divide any number. The end physical quantity which you are trying to achieve should have those dimensions, right? Then only you can do the mathematical operation, right? So how we can write here? In case of physical quantity, let me write here, in case of, I am writing physical quantity as PQ, physical quantity, you can do mathematical operations if the resulting physical quantity supports the dimensions. By dimensions means like meter is a dimension, kilogram is a dimension, time is a dimension, right? कोई भी चीज जो उन चीजों को बनाती है वो उस चीज की डायमेंशन कहलाती है ना? एक बहुत ही जनरल लैंग्वेज में मैं कहता हूँ, जैसे कि एक व्हाइट बोर्ड मार्कर है, राइट? इसके अंदर एक कैप है, इसके अंदर एक टिप है, इसके अंदर इसकी एक बॉडी है, तो ये इसकी डायमेंशंस हो गई. एक डायमेंशन का मतलब ये है कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है ना? एक डायमेंशन का मतलब ये है कि ये एक पेन एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम के अंदर एग्जिस्ट करता है. आप हायर जब आप रिलेटिविटी वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स आएंगे आपके पास, ठीक है? ना आपने दो तरह की चीजें देखी, एक तो आपने क्वांटिटी देखी, रॉ एब्स्ट्रैक्ट नंबर, फिर आपने देखा फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी एक कंसेप्शन है, आपके जो इतराफ में आपके जो आसपास जो चीजें रखी हैं उसको मैथमेटिकली डिनोट करने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते. कुछ एग्जांपल बताइए जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते. Like what do you mean? Is there something around you which you cannot denote using a physical quantity? That's why I said, open your mind. Which I can't measure in physical quantity. You can't denote in physical quantity. I don't know. You don't know? Isa, is there anything which you can't express using physical quantity? I don't know. I think no.
there is nothing. Yeah, like how much you love your mother. Oh yeah. Is that something you can express in a physical quantity, No. right? How busy you are. Well, you can time it, but Yeah, we can time it. We can say that, okay, I am busy for next 2 hours, but how busy I am. Like those are the things like love, hatred, respect, emotions, things which are not empirical, right? So physical quantities are only those quantities which can be empirically quantified. इसको एक और तरीके से हम क्या कहते हैं? It should be empirically quantified. नॉन इम्पेरिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन इम्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स इज द रॉन्ग वर्ड, नॉन इम्पेरिकल जो रियलिटीज़ हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एक बहुत ही की थियोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि वी डोंट सी गॉड, देन व्हाई डू वी बिलीव इन गॉड? यस, बिकॉज जो हमारे पास No, but because our universe is made of dimensions, which is a physical quantity, but God might not have the same dimensions. yes, the simple you know answer to this problem is that we are trying to analyze or measure or define something which is non-empirical using empirical standards, which is not possible, right? Because we don't have any such formulation for non-empirical quantification. That's why it's not a matter of science to raise such questions, right? हम इमोशंस को नॉन इम्पेरिकल समझते हैं, राइट? तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में नहीं दिखा सकते, ठीक है? दिस वाज जस्ट अ साइड नोट फॉर द philosophy. Okay, now these two things you should understand. What is the distinction between a quantity and a physical quantity? Quantity is just a raw number, physical quantity is the meaning given to that number, right? And by meaning you derive at certain physical quantities. Now those physical quantities can be added, subtracted. It depends on what is the outcome you are gonna achieve, right? Is there a situation where you will add length and mass? Probably not. No, there is never a situation in our observation and experimentation activity where we have to add mass and length. That's why we never add 5 meter and 5 kilogram. फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी हो जिसमें कि आप मास और लेंथ के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लें, तो पॉसिबल है कि आप इस चीज़ को करेंगे, है ना? लेकिन अभी हम नहीं करते. जैसे अभी डिस्टेंस और टाइम को हम डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी स्पीड, हाँ, जिसमें कि डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट, right? If we don't have any physical quantity which is a speed, then we will never do it. But in case of raw numbers, there is no restriction. Any number can be added, divided, subtracted, right? So quantities and physical quantity, this is understood. Now we go to the next thing, which is more interesting. तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच वी विल फोकस ऑन. So physical quantity has got some dimensions. What are dimensions? Dimensions are the
components. जैसे अगर मैं बोलता हूं there is a physical quantity which is called length. So what are the dimensions of length? Length is meter, kilometer. Now these are the units. So the dimension is denoted some with something called L. Length हम L से denote कर सकते हैं. just a letter, हम इसको A से भी कर सकते थे but length L से शुरू होता है इसलिए हमने इसको L कहा. जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी मास है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? M से. एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? Small t. T से. डायमेंशंस हमेशा कैपिटल में से डिनोट करते हैं. ये एक साइंटिफिक कम्युनिटी में एग्रीड इसकी तरह का एग्रीमेंट है ये. ठीक है. और इस डायमेंशन की कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट उसको आप स्मॉल से डिनोट करेंगे. ठीक है. अब उसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी स्पीड मैंने आपको बताई थी, इसके डायमेंशंस क्या क्या है? किलोमीटर बाय आवर. लेंथ और टाइम, राइट. तो आप क्या लिखेंगे? L/T. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L(T⁻⁻1) और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे. ठीक है, क्योंकि 1/T इज व्हाट? T⁻⁻⁻1 है ना. यही तो होता है, नहीं होता है? क्लियर है ना ये? जैसे अगर आप लिखते हैं y = 3/x², you can write this as 3 times x⁻². जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाता है ना. ओके, गेट दिस आउट. बहुत सिंपल है. अभी आप जैसे कि हम लोग अभी आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, इस साल तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप लोग 11th और 12th में जाएंगे, इनफैक्ट ईयर 10 से आप ये चीज़ शुरू कर देंगे यहाँ पढ़ना, तो उस वहाँ पे आप लोग को और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके जो डायमेंशंस हैं उसको आपको लिखने के लिए बताया जाएगा. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की हो सकती हैं? 2. ये 2 मैंने बताया था, लेकिन जनरली 3 तरह का होता है. आपको पता होना Scalar. चाहिए. एक तो स्केलर है, Second's vector. वेक्टर, And third, what? इज टेंसर. Oh, tensor. सो टेंसर आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे. वी आर नॉट गोना डील विथ टेंसर्स. वी विल डील विथ व्हाट? स्केलर्स एंड वेक्टर्स. What is tensor like? Can you tell a little bit? Can you tell a little bit what is tensor? एक्चुअली आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी जिसमें उसको मैट्रिक्स कहते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी, बताई जाएगी. बट एक सिंपल टर्म में मैं नहीं बता सकता हूँ. उसका रीज़न है कि मुझे खुद नहीं आता है अभी इस स्टेज पे. तो आप जो है ChatGPT से पूछ सकते हैं कि सिंपल वे में टेंसर्स को एक्सप्लेन करें, तो आपको कर देगा. ठीक है. स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे? A scalar is a number given with a unit, and vector is a number that is given with a unit and is what do you say? Is direction. So a scalar has got magnitude, sorry, first plain English, value. It has got only a value. वैल्यू को फिजिक्स में जो है ना फैंसी वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. जैसे मैं लिखता हूं डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है?
स्केलर है, मैं लिखता हूँ 5 मीटर, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर का डिस्टेंस हुआ, ओनली डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। लेकिन वेक्टर में क्या होता है, यू हैव गॉट अ वैल्यू प्लस यू हैव गॉट डायरेक्शन। क्या क्या चीज है, वैल्यू प्लस डायरेक्शन, है ना। तो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। We can say that vector is a physical quantity which has got both magnitude and direction, right? A scalar is a physical quantity which has got only magnitude. Let's leave tensor for now. Don't stress your mind with tensor. जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, कि स्केलर्स जो हैं दे फॉलो द रूल्स ऑफ algebra, and vectors they follow the rules of geometry. ठीक है। तो स्केलर्स में रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो होता है, लेकिन इसमें जो खास बात याद रखनी है कि उन्हीं दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी बज़ाहिर यूनिट सेम होनी चाहिए, पहली चीज, या जो रिजल्टेंट क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं वो इस चीज को अलाउ करे उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को, है ना, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। वी सी दैट कि 5 मीटर में 5 मीटर ही ऐड होगा, 10 मीटर ही ऐड होगा, 5 मीटर में 2 किलो ऐड नहीं होगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड एनी टू स्केलर, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट आर द रूल ऑफ अलजेब्रा? बेसिकली द रूल ऑफ बोर्ड मास, एंड वेक्टर्स में हमारे पास रूल ऑफ ज्योमेट्री होता है। तो रूल ऑफ ज्योमेट्री को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। Let's get some quick example. अगर नहीं समझ में आ रहा है या बोर हो रहे हैं तो फिर हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, बट ये रूल एक समझ लेते हैं इस क्लास में। रूल ऑफ ज्योमेट्री या वेक्टर क्वांटिटी को समझने के लिए हम एक पहले फिजिकल क्वांटिटी तय करते हैं जो कि वेक्टर है। बताइए कौन सा क्वांटिटी लिया जाए जो वेक्टर है? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, सबसे आसान, सबसे पहला A for apple for the vectors is displacement, है ना। What is displacement and what is distance? What is the difference between these two? Distance is a scalar physical quantity. आप बताइए मरियम, what is the difference between distance and displacement? So distance is it's like the length traveled between 2 points A and B. Okay, so there is something which travels from A to B. So this is initial position, this is final position. So the distance is the total length covered from A to B. And what is displacement? Displacement is the shortest. The shortest distance from A to B, which will look like something this, है ना, ये displacement होगा। So displacement is
the shortest distance between 2 points, whereas distance is the length of complete path covered by an object. Okay, तो आप डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड. ये ऑब्जेक्ट यहां से वहां चल के गया, तो यहाँ पे 2 वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ, और फिर एक वर्ड यूज हो रहा है वहां. तो यहाँ और वहां में एक डायरेक्शन का पहलू छुपा हुआ है ना. आप ये देख रहे हैं कि ए से बी की तरफ वो जा रहा है. नाउ हम किसको सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से सिलेक्ट डिस्प्लेसमेंट. नाउ just for the time being assume that you have got a person, he is nice and happy person. Now this person is moving to east for 3 kilometer. कितनी किलोमीटर चला वो, East 3 kilometers. राइट. फिजिक्स के अंदर जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ये डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ. नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, South. और इस तरफ को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है West. वेस्ट, और राइट हैंड साइड में East. ईस्ट होता है ना. तो वो किधर का आ रहा है, ईस्ट जा रहा है 3 किलोमीटर. नाउ इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 किलोमीटर. अब आप बताइए डिस्टेंस क्या होगा. Distance 7 kilometers. Good. So distance equals to 3 kilometer plus 4 kilometer equals to 7 kilometer. अब आप यहाँ देख रहे हैं 3 kilometer. So 3 is a magnitude, kilometer is the unit, magnitude and unit, right? और number with a unit. So ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी ना. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, The shortest distance from here. can you draw the shortest distance on a copy and I will see It's how it 5 looks like. kilometers. I already. You are understanding, Isa? Yeah. Okay. डिस्प्लेसमेंट बेटा ड्रॉ किया आपने, कितना, वो डिस्प्लेसमेंट. गुड. So displacement will look like something, it will look like this. So you will have a line from here all the way to here and this will be the direction, right? डायरेक्शन उसके उल्टा भी बना सकते हैं, yes or no? Direction. What will be the direction of displacement? It will be northeast. No. Yeah, if this is A, this is B, this is C, so the person has reached from A to C. So the direction will be from A towards C, A से C की तरफ, हाँ? That will be the direction, right? तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि इस जो ये जो लकीर है लाल रंग की, इसकी लेंथ कितनी है, ये कैसे पता करेंगे. Using Pythagoras theorem. And using Pythagoras. how we will Pythagoras theorem. and what is Pythagoras theorem? C squared equals A squared plus B squared. I mean what branch of maths it is? It's geometry. Right, that's what I wanted to. No, trigonometry. Trigonometry. Yeah, so trigonometry is always used on geometric shapes. So यहाँ पे जो आप यूज करेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ ज्योमेट्री यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ AC, राइट. एंड सो अब यहाँ पे चैलेंज ये आया कि हम इसको मैथमेटिकली लिखे कैसे, है ना. डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर लिखेंगे, बट हमें लिखना पड़ेगा 3 किलोमीटर ईस्ट, राइट, प्लस 4 किलोमीटर
नॉर्थ, ऐसे लिखेंगे ना। इसमें 3 चीजें आ गई, एक तो नंबर आ गया, एक यूनिट आ गई और एक डायरेक्शन आ गया। मैथमेटिकली जो आप डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे उसमें आप ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट, उसको आप ऐसे डिनोट करते हैं, ए सी के ऊपर एक लकीर बना देते हैं वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, ए सी वेक्टर। कैसे बोलेंगे इसको, AC vector. यू राइट ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। क्या होता है, AC vector plus equals to AB vector plus BC vector. राइट। अब आपके पास इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इट्स नॉट बिकॉज दिस ट्रायंगल इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ दिस यूनिवर्स, इसलिए राइट हो गया। राइट का मतलब ये है कि जब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही बेहतरीन सा थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, वो थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, and which says that if you have got a right angle triangle, if this is A, this is B and this is C, then this A, B, C are related. कैसे हैं ये related, उनका relation क्या है, C square equals to A square plus B square। तो यहाँ पे AC square, अगर आप सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने एरो नहीं बताया है इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना चाह रहे हैं, The distance. द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू, राइट। इसलिए इसमें हमने क्या नहीं दिया है, एरो साइन नहीं दिया है। एंड व्हाट इज AB, दैट इज 3 स्क्वायर, व्हाट इज BC, दैट इज 4 स्क्वायर, which is 9 plus 16. What is 9 plus 16, Isa? 9 plus 16 is 25. हम जिससे क्वेश्चन पूछे बेटा उन्हीं को, उसी को आंसर देना है, हाँ? तो AC कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25। नाउ ईसा, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? Square root of 25 is 5. गुड जॉब। तो अभी आपको क्या पता चल गया, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 Kilometer. किलोमीटर। गुड, 5 किलोमीटर। तो अब आप AC वेक्टर कैसे लिखेंगे, आपको 5 भी लिखना है, किलोमीटर भी लिखना है और डायरेक्शन भी लिखना है। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ, Northeast. नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ ईस्ट नहीं है Why? ना। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में, अगर ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये हो रहा है कि 45 डिग्री पे आपका होना चाहिए वेक्टर। तो क्या ये एंगल 45 डिग्री है आप कह रहे हैं, नो, व्हाट इज दिस एंगल, you don't, okay, so what you can do is, अभी आप ये लिख सकते हैं 5 किलोमीटर थीटा एंगल विथ ईस्ट, ये तो कह सकते हैं आप। बाय द वे, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4 और 5 होता है, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3, 4. 3 और 4 और 5 लेंथ है, तो आपको ये याद रखना है कि ये एंगल हमेशा 37 डिग्री होता है, ये एंगल हमेशा 53 डिग्री होता है। क्यों होता है, अब ये आपको जब मैं ज्योमेट्री डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। बट अभी आप इस चीज को ध्यान में रखें कि 3, 4, 5 में कितने एंगल बनते हैं,
37 और 53। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं 5 किलोमीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जब आप वर्ड ऑफ यूज करते हैं ना, तो हमेशा उसके साथ वो वाला डायरेक्शन लगाएंगे जिससे एंगल बन रहा है। अभी किससे एंगल बना है? ईस्ट के साथ बनना है ना? नहीं, तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर AC आ गया, विच इज योर डिस्प्लेसमेंट। Displacement is an English word. Yes, it is. It's not a French word. AC is the language of physics. AC vector. ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये फिजिक्स साइंस की लैंग्वेज हो गई, और ये उसका पूरी वैल्यू हो गई। या कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है? 5 किलोमीटर 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट? तो हम साइंस में सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं, है ना? साइंस में क्या करते हैं? तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये हम अभी आपको बताएंगे। इतना भी सही है या अभी और कर सकते हैं क्लास? We can also say 53 degrees to north. No. 53 degree of 53 degrees towards north. 53 degrees towards north from where? From east. Yes, वो लिखना पड़ेगा ना, from या of। ठीक है, आपसे किसी ने बोला कि आप कल आ जाइए हमारे घर। कब? सुबह उठते ही, सूरज निकलते ही, 9 बजे 10 बजे, क्या आप बताएंगे ना टाइम?